Okay, I guess now I'm audible. Hi everyone, hi students, how are you all? I hope that everyone is good and welcome to a new session where we are going to start with a brand new series where I'm going to tell you how you can make nice and quirky front-end projects. So basically in this video, we are going to start with a very basic project. Okay, I have already made a project. I'll show you the project and then we'll start making the project once again with you. Okay, so let me wait for a few seconds. Let me wait for a few more students and then I will start with the class. Okay. So basically, the whole point for this whole playlist or for this whole series is कि आप लोग बढ़िया बढ़िया projects बनाना सीख जाओ. I know that HTML, CSS सब सीख लेते हैं, बहुत easy होता है. It's not a big deal to learn HTML and CSS, but the big deal is to make projects in web development, right? So हम क्या करेंगे? I planned something like that कि हम start करेंगे project एक छोटा सा जो सिर्फ HTML और CSS पे रन करेगा. ओके सिर्फ HTML और CSS को यूज करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड जैसे जैसे विद टाइम आई एम गोना मूव फॉरवर्ड फॉर अदर लाइक प्रोजेक्ट्स. उससे पहले मैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पढ़ा दूंगी. सो once I will start including JavaScript things in the whole series or in the whole projects, then what I'll do is उसको बताने से पहले वो प्रोजेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट बता दूंगी. टिल नाउ आई हैव taught you HTML and CSS के लिए I already referred you a playlist which is on GeeksforGeeks school channel. Okay, now I will start with project today and today's project will only be having HTML and CSS. सिर्फ HTML and CSS को use करके हम आज का प्रोजेक्ट बनाएंगे and yeah, फिर 2-3 प्रोजेक्ट इस तरीके से बना के डिफरेंट टैग्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कौन सी स्टाइलिंग कर सकते हैं. आई विल मूव टू बूटस्ट्रैप. once I'll be done with bootstrap, I will then show you how you can include JavaScript in your projects and make your projects more interacting. Basically ज़्यादा interacting user friendly projects कैसे बनाते हैं. Okay, so just quickly tell me to like all the students who are in the class, just quickly tell me, like just say hi to me so that I can understand that you guys are in the class. And students, one more thing, if you have any doubt during the class, वैसे तो मैंने सारे tags सब कुछ आपको HTML के बारे में पढ़ा दिया है, but even though if you have any doubt while I'll be teaching you, while I'll be showing you the project, you can ask me the doubt in the live chat, or otherwise I have also attached AMA form which is ask me anything form in the live chat as well as in the description box. You can just go there and put your doubt over there and I will basically see your doubt next time, and I will, like, whenever I'll see your doubt in the next class, I will explain your doubt. Okay, or maybe if your doubt will be like, if you have too many doubts regarding something, what I'll do is I'll share you an invite on your mail ID. There I will take your mail ID as an input and I will share an invite on your mail ID, and once that will be done, we can connect on Google Meet and I can explain you everything that you want. Hi. So this basically series, like all the students, जितने भी students हैं जिनको web development में interest है, be the students of class 7th or 8th or 9th, they can also participate because I'm taking this from very basic. बहुत basic से मैं पढ़ा रही हूँ, so you can participate in this and you can learn a lot of things. ठीक है, बहुत basic से पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को. Okay, so don't worry for that. Okay. Now let's start with today's class, I guess. Yeah. So for all the students who are watching this video later on, just just do participate in the live session because live session की बात अलग होती है. You know that in the live session I take your doubts, I see like I constantly see the chat and I take the doubts, right? Okay. Now let's just quickly move to the web page. So basically, if you will see this, okay. If you will see this, this is my HTML code. Here I have attached the डोंट वरी, ये मैं सोचना कि मैम ये तो इतनी जल्दी जल्दी आप बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा. सो डोंट वरी फॉर दैट. ओके, अभी मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ. सो ये मेरा एक HTML का फाइल मैंने बनाया है. दिस इज माई CSS फाइल. हियर आई हैव लिंक्ड दिस CSS फाइल. ओके, I'll tell you how to do that. I have already told you, by the way, but I will again tell you. And here I have basically this is the CSS file. Here I have few, like little bit of code because मैंने बहुत ज़्यादा styling अभी नहीं की है. These are the two pictures जो मैंने attach की हैं अपने web page.
So what this web page is all about, basically we are going to make a web page for Spider-Man. So everyone knows कि अभी Spider-Man की नई मूवी रिलीज हुई थी, राइट? सो हमने बस उसको कंसिडरेशन में रखे एक बहुत ही फन वेब पेज बनाया फॉर यू ऑल. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, so this is, guys, this is Visual Studio Code, and for downloading Visual Studio Code you just you just have to go on Google and you have to search Visual Studio Code, and there from there you just have to download it. Okay, download करने के बाद how to create a files and folders वो सब मैं अभी बताऊंगी. पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा दूं, पहले मैं आपको दिखा दूं that what we guys are making. Okay, so I will open this page with live server. Okay, लाइव सर्वर की हेल्प से मैं ओपन कर रही हूँ इस पेज को, एंड यू कैन सी दिस इज द पेज दैट वी आर गोइंग टू मेक. सो ये पेज हम बना रहे हैं. यू कैन सी दिस इज वेरी सिंपल पेज, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट स्टिल यू आर मेकिंग अ वेब पेज. इफ यू विल शेयर दिस लिंक विद एनीवन देन दे कैन ओपन एंड सी योर पेज. ठीक है, ये आपका बनाया हुआ पेज है. हम इस तरीके का कोई सिंपल सा पेज बनाएंगे अभी. डोंट वरी, दिस इज अ वेरी सिंपल पेज, आई नो, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट, दिस इज द स्टार्टिंग. हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बनाएंगे हम. बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू मेक. ओके, सो let me just okay, let me just open Visual Studio Code again. Okay, okay, let me just open Visual Studio Code. Okay, let me open another file. So to open any file from Visual Studio Code, you just have to go file, you have to open folder. Okay, कौन सा फोल्डर ओपन करना है मुझे? आई ओपन डेस्कटॉप से अपने. आई हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स. लेट मी शो यू कि हमने कहाँ से शुरू किया है. हमने इतने सिंपल प्रोजेक्ट से शुरू किया है. लेट मी शो यू कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ. ओके, 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 वाइल्ड लाइफ गैलरी और गैलरी. ओके, लेट मी जस्ट ओपन दिस गैलरी. Okay, so this is my another like gallery. So अगर मैं इसको ओपन करूँ, इस कोड को ओपन करूँ, so ये कोड भी मैंने like खुद बनाया है. This is also something that you are going to learn. ये भी आप learn करोगे. इसमें you will have multiple photos. You are having this HTML file. You will be having some CSS file. यहाँ पे बहुत सारा आपने CSS basically किया है. Okay, बहुत सारी डिजाइनिंग की है. एंड अगर आप इसको लाइव सर्वर से खोलोगे, इसको लाइव सर्वर से खोलोगे, nav bar नहीं ऐड करेंगे, नहीं सब ऐड करेंगे, टेंशन मत लो. सो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड दिस, आई हैव क्रिएटेड दिस गैलरी. लेट मी ओपन अनदर वन. वेट, दिस इज टू मच ऑफ मी एंड आई डोंट वांट दैट. लेट मी जस्ट क्लोज दिस. लेट मी ओपन अनदर फोल्डर. ओके, not this, wait, let me open another folder. Open folder, let me open another folder. Let's go with this wildlife gallery. ये वाइल्ड लाइफ गैलरी में ओपन कर रही हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू मेक. ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं. ओके, सो ये सारी इमेजेस जो है मैंने, ओके, ये लोड नहीं होंगी बिकॉज, ओके, ये इमेजेस लोड नहीं होंगी. सो लेट्स डू वन थिंग. ओके, लेट मी शो यू दैट ओनली. ओके, लेट मी ओपन अनदर फोल्डर. सो बेसिकली आपने देख लिया कि कौन सा वेब पेज, आप बेसिकली कितना सिंपल सा वेब पेज. नैव बार भी ऐड करना सिखाऊंगी, डोंट वरी राहुल, हम नैव बार भी ऐड करना सीखेंगे. लेट मी ओपन अनदर फोल्डर. सो दीज आर द जस्ट लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू मेक. ठीक है, ये सिर्फ एक चीज़ है, हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे. सो डोंट वरी. गेम क्लोन गैलरी. ओके, वाइल्ड लाइफ गैलरी. लेट मी ओपन दिस गेम क्लोन. ओके, सिलेक्ट फोल्डर. ओके, यहाँ पे हमने फेव आइकन अटैच करना सीखा है. हमने मूवी का ट्रेलर बेसिकली कैसे अटैच करेंगे ये भी सीखा है. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, वेट, let me open that gallery only, my gallery. Okay, so what I have done there is basically I have created a gallery of my pictures where what I have done is I have basically had like I had a lot of pictures of mine, and usme the main thing is the main important thing is that whenever you will go to any picture, like pehle these pictures are black and white, and as soon as I'm going to any picture you can see color.
right? You can see color here. Okay, so we are going to make something like this also. So we are starting with this very basic page. Stay tuned, like stay connected with me. हम धीरे धीरे चीजें सीखेंगे because I'm starting this for students of school also, so you guys can just see. Okay, you guys can just learn. Okay, now let me just close this gallery. Let me just open this HTML file. So these are the two pictures that you can download any pictures from internet and you can like add in your folder. So हम कैसे शुरू करेंगे? Like let's start from scratch. मैं सब कुछ minimize कर देती हूँ. So your first thing is you have to download Visual Studio Code. Once you have done that, what you have to do is you have to make a new folder on your desktop or wherever you want. I'm just making it, okay, I'm just making it Spider-Man 2. Man 2, because this is my second folder named as Spider-Man. This is the first folder. Okay, now what I'll do is I'll open Visual Studio Code. How to open a folder and create files in that folder. Okay, यहाँ पे जाना files में, open folder में जाना, and आपने कहाँ बनाया था? हमने desktop पे बनाया था, right? So we'll go in desktop, we'll go in Spider-Man 2. Okay, initially we don't have any folder here. हमारा यहाँ पे कोई folder नहीं है, कोई file नहीं है, sorry, आई एम सेइंग फोल्डर अगेन एंड अगेन. कोई फाइल नहीं है, हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे. आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं इंडेक्स ही दूंगी बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड वे. index.html. डोंट फॉरगेट दिस डॉट एक्सटेंशन बिकॉज डॉट एक्सटेंशन से ही पता चलेगा हमारे सिस्टम को कि किस टाइप की फाइल है. .html फाइल, इसका मतलब यहाँ पे html का कोड रहेगा. ओके, नाउ टू मेक अ css फाइल, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर टू ऐड अ फाइल and style. I will again name it as style.css. Okay, now first I have to just write the code in HTML file. I also have to add two pictures. So what I'm gonna do is I'm just going to go in this Spider-Man folder and यहाँ से I'm gonna copy these two pictures and I'm gonna paste it here. Let me paste it here. Okay, I've pasted these two pictures here only. Now let me close this and yeah, let me open my Visual Studio Code. So यहाँ पे अब दोनों pictures भी आ गई. If you can see, यहाँ पे दोनों हमारे pictures भी हमने डाल दी. Now what I have to do first is, if you'll see the web page that I have created, so what is the first thing that you can see? सबसे पहले हमने क्या लिखा है? We have written the name of the actor, that this is the actor who was featured as Spider-Man. So Tom Holland was featured as Spider-Man. Now before starting with this whole thing, I already told you that we are going to write this doc type also, doc type HTML. This is not necessary, it's totally your wish, but it's preferred to write. Okay, it's just preferred to write. Okay, cool. So basically I'm going to tell you how I'm going to write all this code. ठीक है, you are seeing this code, so ये पूरा code we are going to write. I'm going to write again, like so that you guys can understand. Okay, 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 HTML. Okay, I have just okay, just let me just change the rename. मैंने यहाँ HTLM लिख दिया है, इस वजह से it's showing some problem. HTML. Okay, enter. Now it's perfect. Now I have to start with HTML tag. You guys know that whenever we are going to write any HTML code, we are going to put it inside the HTML tag, right? And यहाँ पे हम close करेंगे इसको, HTML tag को, ये automatically close हो गया. Now inside this we are going to have a head and we are going to have a body. Okay, head में हम सारे important links डालेंगे. Basically if you want to connect like HTML file with a CSS file or even later on with JavaScript file, you have to like specify the character set, which is the basically the standard character set. You also, if you want to add any icon to your page, you can just use fav icons, and for attaching that fav icons you again need like you will link that in the head of the HTML code only. Okay, now let's make the head and body. First of all, I'm going to just write all the tags which are important, जो अभी तक important है. सारे tags I'm not going to write. Okay, ये हो गया हमारा head tag, and let's write a body tag. Okay, okay, so ये मेरा head tag हो गया and body tag हो गया. Now inside this head tag, what I have done is I have given the title. Okay, for giving the title, you know that we write title tag. We write title tag, and let me just also close this. Okay, inside this title tag, what I'm going to write is हमारे जो भी पेज का title आपको देना है वो आप डाल सकते हो. So what I'll do is I'll write Spider.
फिर स्पाइडरमैन में बस अभी टाइटल दे रही हूँ. ओके, नाउ again what you have to do is, if you'll go back to this code and if you will see, I have attached meta carsect utf and 8, because this is the standard one. That's why we do this. And here again you can see link href. So I have already told you about this link tag. This link tag is used to link multiple files together. So here I'm attaching the style css file, basically the css file. So for that I'm using href, and relation is style sheet. Rel is for relation style sheet, and here you just don't need to write this type text. Okay, so what I'm gonna do is, instead of writing all this over again, I'm just gonna copy it and like paste it. I hope you understood the meaning of this. Okay, the meaning is very simple. Okay, let me also add char set. Okay, for the students who wants कि हमारी और भी चीज़ों में nav bar ऐड करने से कौन, all of that I'll do. हम बेसिकली बहुत कुछ सीखेंगे. आप लाइक बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सीखोगे. बस जस्ट होल्ड ऑन, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. इट डजंट मेक सेंस, स्कूल के बच्चों के लिए डजंट मेक सेंस अगर मैं डायरेक्ट बहुत अच्छा बहुत हैवी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, starting with a very basic project. Okay, utf8. Okay, so this is the char set that I'm going to add, and yes, ठीक है ना. ये हमारी चीजें हो गई. Now let's go to the body. If you'll see the web page, body में you are seeing this Tom Holland as Spider-Man. ये पहली चीज आपको दिख रही. तीनों का साइज अलग अलग है. You know, for different sizes what we do, कौन से टैग हम यूज करते हैं. Now I want you guys to answer. अगर मुझे टेक्स्ट डिफरेंट साइजेस में चाहिए एक एक लाइन में, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी. क्विकली गाइस आंसर इन द लाइव चैट कि अगर मुझे टेक्स्ट अलग अलग लाइन में चाहिए और अलग अलग साइज में चाहिए, विच टैग आई एम गोइंग टू यूज. कौन सा टैग यहाँ पे यूज होगा टू गेट. अभी ये मत सोचो कि ये बीच में या कहाँ है, बस मुझे ये बता दो कि टॉम हॉलैंड एज एंड स्पाइडरमैन, ये तीनों जो फॉन्ट है इनके साइज अलग हैं. So for that, what is basically the whole like what is the tag that I'm using? मैं क्या use करूँ so that I can achieve this? Just quickly let me know. Okay, you guys just quickly tell me, and in the meanwhile I'm writing. Okay, head tag में भी there are multiple head tags, right Rahul? So we are going to have multiple head tags for multiple sizes. So Tom Holland I've written in h1. Okay, then I have to write as. So as is smaller. If you will see as ka size in the page, it is smaller, right? So I'll use h3 for that. h3 for that, and yeah. Okay, as, and after that again Spider-Man is in different size, so uske liye I'm going to use h2 tag. Okay, now here I'm going to write Spider-Man. Now अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, प्लीज आस्क मी. Okay, Soham is asking which code editor is best for beginners. I guess you can start with Visual Studio Code only. This is the best and this is the simplest one. Okay, so ये हमने कर लिया. Now there are two ways to open this. ठीक है, दो तरीके से हम इसको open कर सकते हैं. If I'll save this file, Control S. I'm just saving it using Control S. And if I'll minimize everything from my screen, then you can see ये folder था हमारा. Here I have this index file. I can open with, you can see यहाँ पे जाके right click करके open with Google Chrome. Okay, if I will do this,
टॉम हॉलैंड इज स्पाइडरमैन, जो हमने टेक्स्ट देखा था वो टेक्स्ट हमने अचीव कर लिया है। नाउ द थिंग इज कि मुझे ये टेक्स्ट सबसे पहले सेंटर में चाहिए, देन वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स फॉर दिस, राइट। हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, अब देखते हैं कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल बी यूजिंग अ टैग विच इज सेंटर टैग, जिससे ये सारा स्टफ सेंटर में आ जाएगा। Okay, I'll open it here and I will close it here. Okay, center tag में मैंने डाल दिया। Now if I'll just save this Control S and if I will go on the page, पेज अगर आप देखोगे पेज पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये कब रिफ्लेक्ट होगा? जब मैं इसको रीलोड करूंगी। Okay, wait, it's not reflecting. Let me see why. Okay, let me first save this. Save this, Control S. And okay, yeah, so basically after even saving this, if I'm reloading it, it's not happening. Let me do one thing. Let me again go back to this index.html file and again open it. Okay, it's not happening, just give me a second. Yeah, okay, yeah. So basically I just did a small mistake, the spelling mistake. These are the stuff that can happen here and there, spelling mistake and all of that. Yeah, okay. So now if I will save this and if I'll go on the page, if I'll go on this page, okay, I have to open it. Wait, let me open it again, and here you will see that the change is reflected. यहाँ पे अब आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला गया। नाउ द थिंग इज कि अगर आपको बार बार आप चेंज करोगे, बार बार रीलोड करना पड़ेगा पेज, तो दिस इज वेरी टायरिंग एंड इधर से ना बहुत चांसेस हो सकते हैं मिस्टेक्स के। तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी जस्ट गो इन दिस एक्सटेंशंस। आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आओ, नीचे लास्ट में यू कैन सी एक्सटेंशंस। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशंस है, यहाँ पे जाओ एक्सटेंशंस में, एंड वंस यू विल गो देयर, here you have this live server. You can just search here live server. Okay, ये लाइव सर्वर जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको, मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करूंगी, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वंस यू विल डू दैट, you will like आपको थोड़ा easy हो जाएगा how you can open your pages every time. Just right click, you can see open with live server. लाइव सर्वर से ओपन कर सकते हो and just give a second and आपका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हो जाएगा। now let's do one thing. So basically till now if anyone has any doubt you guys can ask. Okay, अगर इतने से पार्ट में किसी को, अभी मैं स्टाइलिंग पे नहीं पढ़ूंगी, अभी लेट्स गो बैक एंड वर्क टुवर्ड्स अदर पार्ट। उसके बाद हमारे मेन पेज में क्या है? मेन पेज में हमारी इमेज डली हुई है, राइट। दिस इमेज, वेट, वी हैव दिस इमेज, राइट। So we have to add this image, and image again center में. Okay, so what you guys have to do is you have to go and either again you just have to open this center. Okay, इस center में you have to add an image. Now to add any image, which tag do you guys use? मैंने आपको बताया था कि इमेज ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। Quickly guys, tell me which tag do we use to add image in our web page? I'll wait for you guys. Yeah, I'll wait for you to tell me. Till then let me just go here. Okay, okay, you guys can just quickly tell me that what is the basically what is the main which is the tag that we use to get the image.
Yeah, just quickly tell me guys that what is the main tag that we use. Okay, img src. Cool, cool, cool. Amazing, amazing. Okay, okay, so let's get back to the code. I hope that my code is visible to everyone, right? कोड सबको दिख रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो स्क्रीन पे, डू लेट मी नो. ओके, डू लेट मी नो. Cool. So basically we are going to use img src, and then we are going to set width and height. Let me show you how we are going to do that. Okay, so we are going to have img tag, and here we are going to have src basically, and here we are going to write the address. अब अगर आप गूगल से कोई फोटो डाल रहे हो तो वहां से कॉपी लिंक कॉपी करके आप यहाँ डाल सकते हो, बट मैंने क्योंकि पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस इमेज फ्रॉम हियर. सो लेट मी फर्स्ट चेक कि कौन सा वाली इमेज. ओके, आई हैव टू ऐड सेकेंड इमेज. ओके, सो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द इमेज. जस्ट प्लीज रिमेंबर कि आप बिल्कुल भी उसमें गलती ना करें. ओके, बिल्कुल भी इसमें गलती ना करें, जो नाम हो वही टाइप करें, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा. ओके, कूल. सो ये मैंने पिक्चर डाल दी. नाउ इफ आई अगेन गो बैक, ओके लेट मी जस्ट ओपन let me again add one more thing here. Okay, can you guys see the page? Okay, cool. Okay, let me just give me a second guys. Yeah, cool. So let's go to the web page. So as soon as I've entered the image, what I'll do is, मैंने वहाँ save नहीं किया code. Let me just save it. Image add करते ही, as soon as I will save the code. Okay, as soon as I'll save the code, you can see the change. ठीक है, यहाँ पे picture आ गई. Now I have not changed the size and width. If you want to set the width and size of this image, you can set the width and size of this image. Okay, that will not be a problem. Okay, cool. Now let's go back to the code. Okay, so ये हो गया. Now what we are going to do is, अब हमें इसके बाद हमने क्या देखा था, क्या हमारे मेन कोड में क्या चेंज था. एक लाइन है, राइट? सो आई हैव टू राइट अ लाइन, आई हैव टू मेक अ लाइन. नाउ टू ऐड अ लाइन ऐड करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए व्हाट इज द टैग दैट वी यूज? ये जो लाइन देख रहे हो आप इस पेज में, यहाँ पे एक लाइन है नीचे, राइट? सो इस लाइन को ऐड करने के लिए, ये टेक्स्ट बेसिकली आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम हियर ओनली. ओके, कंट्रोल सी. सो नाउ यू गाइस टेल मी, ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए एंड उसके बाद लाइन ऐड करने के लिए मैं कौन से टैग्स का यूज करूं? जस्ट क्विकली टेल मी गाइस, quickly tell me what is the tag that I have to use for adding the line and adding the paragraph. I'm waiting for your responses. Guys, just quickly tell me. Okay, I can see people are not answering. Not a problem, I will answer if you guys will not answer. So basically, to add a line and paragraph, I have to use p tag and line tag.
Okay, so let me add the p tag. Paragraph add करने के लिए I'm going to add p tag. Okay, and here I just have to paste the paragraph. Okay, let me just put it in multiple lines so that सब कुछ एक ही पेज पे दिख जाए आप लोग को. Okay, now okay done. पैराग्राफ ऐड हो गया. अब लाइन हमें ऐड करनी है. सो फॉर लाइन जस्ट क्विकली टेल मी, लाइन के लिए कौन सा टैग यूज करोगे आप? सो बेसिकली आप HR टैग यूज करोगे लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल. ओके, लाइन के लिए. सो टिल नाउ this much part is done. Let me save it. Okay, let me save it and let me see the code. Okay, let me see if I can see the difference in the page. Okay, पेज पे जाते हैं एंड पेज पे देखते हैं डिफरेंस आया या नहीं. ओके, हियर यू कैन सी वी हैव पैराग्राफ एंड पैराग्राफ के बाद एक लाइन. पैराग्राफ और लाइन आ गई. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर द पैराग्राफ एंड लाइन, द नेक्स्ट पार्ट इज टू ऐड दिस another image and write this line, Spider-Man with his girlfriend MJ. So if you remember the movie or if you have seen the movie, sorry for the thing if you don't have watched, if you have not watched the movie and if I'm telling you anything which you don't want to know. So basically let me add this. Okay, let's add this. Okay, let me go to the code and again what I'm going to do is I'm going to add the paragraph. Okay, and okay, let me add p tag. Okay, wait. Okay, let me add a p tag and let me close a p tag, and inside this let me write the paragraph. And before this हमारी एक और image है. Let's add the image. Image के लिए again what you have to do is again you have to do the same thing. I'm just copying it from here ऊपर से. ओके 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 कूल. सो आप देख रहे हो मैंने इमेज ऐड कर दी और मैंने लास्ट पैराग्राफ ऐड कर दिया एंड मैं इसको सेव करूंगी. एंड लेट्स गो टू द पेज एंड लेट्स सी इफ दिस इज विजिबल और नॉट. कैन यू सी पिक्चर ऐड हो गई एंड लास्ट का सॉरी पिक्चर ऐड हो गई. ओके, आई हैव रिटन द सेम पिक्चर. वेट, एंड स्पाइडरमैन विद हिज गर्लफ्रेंड MJ. सो इसको सेंटर में लाना है, पिक्चर दूसरी होनी चाहिए. अगेन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करोगे यू हैव टू डू चेंजेस मल्टीपल टाइम्स, सो डोंट गेट वरीड फॉर दैट. ठीक है, सो इमेज मुझे दूसरी वाली डालनी है. आई चेंज द इमेज एंड अगेन दिस हैव टू बी इन सेंटर. सो अगेन आई विल ओपन सेंटर टैग. Okay, and I have to put this whole paragraph inside this center tag. Okay, हो गया. Now let me save this and let's see the main page. Okay, so this is the main page. If you can see, जो हमने पेज बनाया था लगभग उसके जैसा ही है, बस पिक्चर्स बड़ी हैं. Okay, so I have already told you how you have to add this. Now what your task is, आपका task क्या, आपका काम क्या है? Let me tell you, let me give you a homework. Okay, so basically यहाँ पे reflection नहीं आया है, Spider-Man with his girlfriend. Okay, let me do this. Okay, again a small mistake. And let's just increase the size of this text. So let's just put this in not p tag, let's just put this in h3 tag. Okay, let's just save this, Control S, and let's go to the web page and let me show you this and let's see this. Okay, now you can see जो पिक्चर थी, जो टेक्स्ट था, सब कुछ आ चुका है यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से. द ओनली डिफरेंस इज नाउ यू हैव टू ऐड दीज कलर्स. ये कलर डालने हैं आपको. ओके, ये कलर डालना है एंड यू हैव टू चेंज द साइज एंड विड्थ ऑफ दिस होल
the size and width of this image. Okay, इमेज का साइज और विड्थ आपको चेंज करना है. ओके, इफ यू विल सी दिस पेज, ये पेज देखो एंड ये पेज देखो, इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि टेक्स्ट में कलर नहीं है एंड पेज का साइज बड़ा है. सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू. ओके, अगर ये चीज अचीव करने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन आस्क द डाउट in the comment section, or I have attached ask me anything form. You can ask the doubt in ask me anything form also. Okay, so now your task is कि आपको ये जो text है इस पेज को थोड़ा सा आपको और इस पे वर्क करना है, so that you can create a page something like this. ठीक है, आपको कुछ कलर्स डालने हैं, आपको यहाँ पे नीचे वाले टेक्स्ट के लिए भी कलर डालना है एंड थोड़ा बहुत इमेज के साइज वाइज से. एंड यू कैन सी हियर हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत सेंटर में है एंड हेयर इफ यू सी द टेक्स्ट इज नॉट इन प्रॉपरली सेंटर में नहीं है. लेट मी डू द चेंजेस ओवर हियर. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि वहाँ पे CSS की स्टाइलिंग हमने पहले वाले पेज में कर रखी है एंड दूसरे वाले पेज में मैंने CSS की स्टाइलिंग नहीं कर रखी है. सो लेट मी डू द स्टाइलिंग ओवर देयर. So basically if I'll do the styling over here and again if I will save the page, basically Control S, then you can see कि जो थोड़ा बहुत changes है वो reflect हो गया. Okay, Control S, Control S. Okay, now let's go back to the page. ओके, यू कैन सी स्टाइलिंग डालने के बाद यू कैन सी पेज का जो टेक्स्ट का साइज है ये चेंज हो गया है. ये पहले बिल्कुल आपके एंड टू एंड पे था, अब ये चेंज हो चुका है. नाउ द ओनली टास्क इज टू ऐड कलर्स इन हियर. ओके, टू ऐड कलर्स इन हियर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस टास्क टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, ये चीज आप अपने आप करोगे. कूल. So let me go back here and let me, what I have to do is I have to open the display capture and I will close this. Okay, let me take you to the code that basically I have written. So basically इस कोड में कलर एंड स्टाइल सब कुछ है स्टूडेंट्स. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने थोड़ी सी इनलाइन स्टाइलिंग की है, स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, कलर. सो यहाँ से आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है. ओके, सो दिस इज द टास्क दैट यू गाइज हैव टू डू. आप अपने आप से करो. ठीक है, एंड अपने आप से करके एंड देन आप पेज को कंप्लीट करो. आई होप एवरी वन विल बी एबल टू डू दैट. सब ये चीज कर लेंगे. अगर किसी को कोई भी डाउट होता है यू गाइज कैन आस्क मी through AMA form which I have linked in the description box as well as in the chat section. Okay, so that's it for today's class. If anyone has any doubt, this is the time to ask, and if you don't have any doubt you guys can just quickly tell me. I will just end the class. ठीक है, प्रोजेक्ट समझ में आया, प्रोजेक्ट में मजा आया, कोई डाउट है, कुछ भी है बोलो. गिव योर सजेशंस, गिव ओपन सजेशंस. अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बहुत बेसिक है, इसको और डिफिकल्ट बनाओ, वो मैं बनाऊंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट I'm quite open for your suggestions, so you guys can give your suggestions. I'll be like, and अगर आपको अच्छा लगा सेशंस तो वो भी लाइव चैट में बताओ. एंड इस पेज को प्लीज कंप्लीट करना. योर टास्क इज कि आपको पेज मैंने इतना बना के दिखा दिया है, यू हैव टू कंप्लीट इट and make it something like this. Okay, you have to complete it and make it something like this. Only the changes are कि थोड़ा सा आपको font change करना है and थोड़ा बहुत colors डालने हैं आपको text में. I hope you guys can easily do that. Right? Okay, guys, please if you okay, so that's it from my side. And if you guys like this video, if you guys like this project and if you want more projects, आप और projects चाहते हो और difficult projects, next time मैं और difficult और अच्छे level के projects लेके आऊँगी जिसमें हम जो मैंने आज पढ़ाया ऐसे tags नहीं use करेंगे, कुछ अलग tags use करेंगे. ठीक है, कुछ अलग सीखेंगे वहाँ पे. If you guys want all of this, please support me by giving as much as likes as you can and share it with your friends. Okay, जब तक आप लोग likes दोगे, आप लोग मुझसे interact करोगे, आप लोग मुझे बताओगे that okay you guys like this, okay you want this that, तब मैं और अच्छे ideas और अच्छे projects के साथ आ पाऊंगी. If you guys will not
like show interest, then there's no point of me coming every week with a new project and teaching you that project and all of that. Okay, so please like this video, share it with your friends. If you have any suggestion, you can write down in the comment section. I'll be more than happy to take your comment. If you have any doubts, you can write in the comment section or in the ask me anything form that I have linked in the description box, as well as on the uh, live chat. Okay, at the starting of the live chat. Okay, so that's all from my side. I hope that you guys have learned something and you guys have like enjoyed this, and I'll see you next time. Till then, take care, keep learning, keep coding, guys. Okay, keep coding. Please just keep coding, don't stop. Okay, don't ever stop, just keep learning, guys. Okay.